बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम हफ्सा इकबाल और आज इस वीडियो का टॉपिक है क्रिएटिंग योर फर्स्ट एक्सेल वर्कबुक। प्रीवियस वीडियोस में हम बात कर चुके हैं वर्कशीट की बेसिक चीज़ें, कि चीज़ें किस तरह से इस्तेमाल होती हैं, डिफरेंट हमारे पास कीज, रिबन का क्या काम है और सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम एक्सेल वर्कबुक क्रिएट करना सिखाएंगे। हम सिंपल मंथली सेल्स प्रोजेक्शन का टेबल बनाएंगे और फिर उसी डाटा को यूज करते हुए चार्ट बनेगा। Getting started on your worksheet. Start Excel and make sure you have an empty workbook displayed. To create a new blank workbook, press Ctrl plus N. The sales projection will consist of two columns of information. Column A will contain the month names and column B will store the projected sales numbers. Select cell A1. Upper left cell in the worksheet is called cell A1. By using the navigation key if necessary, the name box displays the cell's address. ये हमारे पास नेम बॉक्स होता है, जो भी हमारे पास सिलेक्टेड सेल होता है उसका नेम हमारे पास यहाँ शो हो रहा होता है। हम कोई भी सेल सिलेक्ट करेंगे तो इसका नेम C5 जो है वो हमारे पास नेम बॉक्स में शो होता है। हमने सिलेक्ट कर लिया सेल A1। टाइप मंथ इनटू सेल A1 and press enter. Select cell B1, type projected sales and press enter. The text extends beyond the cell width, but don't worry about that for now. हम यहाँ से इसकी width extend भी कर सकते हैं easily. Filling in the month names. सबसे पहले आएगा January. Jan is the abbreviation of January. You can enter the other month name abbreviation manually. Make sure that cell A2 is selected. Notice that the active cell is displayed with a heavy outline. At the bottom right corner of the outline, you will see a small square known as the fill handle. ये हमारे पास जो प्लस साइन होता है इसको हम कहते हैं fill handle. Move your mouse pointer over the fill handle. Click and drag down until you have highlighted from cell A2 down to cell A13. ये हमारे पास जनवरी से लेकर दिसंबर तक एब्रिविएशंस आ गई हैं सब मंथ्स की. Release the mouse button and Excel automatically fills in the month name, entering the sales data. Now, you provide the sales projection numbers in column B. Assume that January sales are projected to be $50,000 and that sales will increase by 3.5% in each subsequent month. Select cell B2 and type 50,000, the projected sales for January. You could type a dollar sign and comma to make the number more legible, but you do the number formatting a bit later. 50,000 and press enter. To enter a formula to calculate the projected sales for February, move to cell B3 and type the following. तो हमें हमेशा याद रखें कि इक्वल टू का साइन लाजमी लगाना होता है जब हम फॉर्मूला कोई भी टाइप करेंगे. B2 ये हमारे पास था B2, इसको यूज करना है हमने.
मल्टीप्लाई 103.5%. Enter. When you press enter, the cell displays 51,750.0. The formula returns the context of cell B2 multiplied by 103.5%. In other words, February sales are projected to be 103.5% of the January sales. या इस तरह से कह सकते हैं कि 3.5% इंक्रीज हो रहा है. The projected sales for subsequent months use a similar formula, but rather than retype the formula for each cell in column B, take advantage of the autofill feature. Make sure that cell B3 is selected. Click the cell's fill handle, drag down to cell B13 and release the mouse button. अब हमारा B2 को यूज करते हुए सारे जो नेक्स्ट डाटा है वो फिल होगा. तो यहाँ पे तो हमने फॉर्मूला लिखा था. अब यही फॉर्मूला बाकी सब वैल्यू के लिए भी यूज होगा. तो हम इसको एंटर किया तो ये वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगी. उसके बाद हम फिल हैंडल को यूज करते हुए इसको B13 तक ले जाएंगे और हमारी सारी वैल्यूज फिल हो जाएंगी. फॉर्मेटिंग द नंबर्स. सबसे पहले कि फॉर्मेटिंग होता क्या है. फॉर्मेटिंग में हमारे पास आ जाता है फॉन्ट, अलाइनमेंट और नंबर्स. फॉर्मेटिंग द नंबर्स. The values in the worksheet are difficult to read because they are not formatted. In this step, you apply a number format to make the number easier to read and more consistent in the appearance. Select the number by clicking cell B2 and dragging down to cell B13. Don't drag the fill handle this time, though, because you are selecting cells, not filling a range. इसको हमने सिलेक्ट करना है ना कि फिल करना है. ये हमारे पास फिल करने के लिए था, ये हमारे पास सिलेक्ट करने के लिए होता है. हमने सिलेक्ट कर लिया है B2 से B13 तक. एक्सेस द रिबन. ये हमारे पास रिबन है. होम में हमने चूज किया हुआ है होम. इन द नंबर ग्रुप, click the drop down number format control. Initial display is general and select currency from the list. The number now display with a currency symbol and 2 decimal places. ये हमारे पास 2 decimal places तक select हुआ. Decimal places are not necessary for this type of projection. Make sure that the range B2 से B13 तक selected है. हम होम को चूज किया था, नंबर में गए और फिर क्लिक करेंगे डिक्रीज डेसिमल बटन पे. यह है डिक्रीज डेसिमल प्लेस बटन. वन ऑफ द डेसिमल प्लेसेस disappears. Click that button a second time and the values are displayed with no decimal places. Make your worksheet look a bit fancier. Activate any cell within the range A1 to B13. ये हमारे पास A1 था और ये हमारे पास B13 है. इस रेंज में कोई भी हम सिलेक्ट करेंगे सेल. चूज इंसर्ट टेबल. Click OK to close the Create Table dialog box. Creating a chart. Activate any cell in the table. Choose Insert. ये हमारे पास चार्ट्स हैं. रिकमेंडेड चार्ट्स को हमने चूज करना है.
Excel displays some suggested chart type options. In the Insert Chart dialog box, Insert Chart के नाम से dialog box appear हुआ है. Click the recommended chart. हम इसको select कर लेते हैं. Click OK button. Excel inserts the chart in the center of the window. To move the chart to another location, click its border and drag it. इसी तरह से हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं अपनी वर्कशीट का. Saving your workbook. It's time to save your work to a file on your hard drive. Click the Save button on the Quick Access toolbar. और इस तरह से हमारी जो फाइल जो हमने अभी बनाई है वो सेव हो जाएगी. ये सेव हो चुकी है. यहाँ पे हमने क्लिक किया था और हमारा आज क्रिएटिंग वर्कशीट का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ है. इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं. शुक्रिया.